महिन्यामध्येच आरबी एंड गौरव टांग, मी तुम्हाला दोघांना विचारतो बघा, रोल नंबर 39 to 69 पर्यंत कोणाचाही डाटा असला मी तुम्हालाच फोन करणार. आणि तिथून 21 to 38 श्रद्धा सुरवसे आणि 1 to 20 भाग्यश्री भोंग. So what I was telling that so in the last class जरा तुम्ही पुन्हा सांगतो मी तुम्हाला, सिलेबस एग्जाम ते सगळं चिंता जास्त टेन्शन तुम्ही घेणार, मला माहित आहे, घेऊही नका, ते तर होत आहे. सो नाउ ॲज आय वॉज टेलिंग दॅट आय वॉज टीचिंग यू द शीट पाईल वॉल्स दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्कहेड अँड कॉफर डॅम्स. तो शीट पाईल वॉल बद्दल सांगितलं मी तुम्हाला. लास्ट क्लासमध्ये एक व्हिडिओ पण दाखवलो मी तुम्हाला, थोड़ा बहुत आइडिया आला असेल तुम्हाला. शीट पाइल वॉल का रहता है? शीट पाइल वॉल इज जनरली अ वॉल, टेम्पररी वॉल कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट दी शीट पाइल वॉल इज देयर टू प्रोटेक्ट दी वॉटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स. पुन्हा एकदा डिटेल मध्ये चांगलं हे चॅप्टर तुम्ही डिटेल वाचा, हे चॅप्टर चांगलं वाचा. स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप थोडं काय डिटेल नाही, ते पण लहानच आहे, एक 2-3 टॉपिक त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे, तेवढं तुम्ही वाचलात. पाईल फाउंडेशन चांगलं करून घ्या, बेअरिंग कॅपॅसिटी चांगलं करून घ्या, दॅट इज इनफ. फाउंडेशन मध्ये हेच इम्पॉर्टंट आहे. सॉइल एक्सप्लोरेशन पण इम्पॉर्टंट आहे, पण टोटली थेरी आहे, यू कॅन डू इट युअर सेल्फ. ओके, सो ह्याचे अनालिसिस तुम्हाला चांगलं करायला आला पाहिजे. गॉट इट? सो नाउ bulkhead and coffer dam, so different classifications I told you, and special classification is anchored sheet wall and cantilever sheet wall. Anchor sheet wall and cantilever sheet wall. Got it? Okay, thank you Nisha, thank you. Others also please do it. And once again I remind you, मी पुन्हा एक आता तुम्हाला फॉर्म पाठवलो, गुगल फॉर्म मॅडम पाठवले, बागल मॅडम. ए बी चे दोघं मुलं मुली आपले आपले आधार कार्ड नंबर फटाफट फटाफट घालून टाका. अँड हे सगळं काय घेऊन होतो तुम्हाला, नाव डेज युनिव्हर्सिटीला पाठवत होतो मी. गव्हर्नमेंट इज प्लॅनिंग टू गिव्ह कोविड इंजेक्शन्स डायरेक्टली टू दी कॉलेज स्टुडंट्स इन कॉलेज इटसेल्फ. तुम्ही आपले डाटा दिलात म्हणजे आम्ही तुमचं, ओके आकांक्षा, यू ऑलरेडी डिड बेटा, आकांक्षा आता केलीस का? ओके, इवन इफ डू लाईट इज ओके. तर तुम्हाला हे सगळं का डाटा घेत होता मी, हे डाटा पाठवलं तर तुमचं कोविडचं इंजेक्शन डायरेक्टली भेटू शकतं तुम्हाला. आम्ही कॉलेजमध्ये अरेंजमेंट करून तुमचा डाटा रेडी होऊन येतोय, तुम्ही तर यायचं इंजेक्शन घ्यायचं, हे सिस्टम मे बी. आणि एवढं इंजेक्शनला संपणार नाही, स्टील फर्दर ट्रीटमेंट्स आर देअर, सो यू कॅन गेट डायरेक्टली फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी. त्या बेनिफिट करता सगळं तुमचं डाटा आम्ही जमा करून युनिव्हर्सिटीला पाठवला. सो वेन एव्हर टीचर आस्क यू टू गिव्ह दॅट डाटा, इमिडिएटली तुम्ही द्यायचं. त्याच्याकरता किती उशीर करतात ते आम्ही शिवा खावा लागतंय तुमच्याकरता. Okay, so now after classification of sheet piles, next important thing, this is very important thing, basic thing you should know. I started cantilever sheet pile. Cantilever sheet pile means sheet pile which is fixed at one end. Once again I'll repeat it. Concept बघून घ्या चांगलं, डायग्राम्स बघून घ्या. करायचं काहीच नाही, खूप सोपं आहे. करायचं काहीच नाही, हे खूप सोपं आहे. हॅलो, so the thing is what I was telling that, हे जरा चांगलं बघून घ्या. दिस इज द कॅन्टिलिव्हर शीट पाईल वॉल. पुन्हा एकदा सांगतो, त्या दिवशी तुम्हाला कळल्यानंतर बघा, जेव्हा सॉइलचं प्रेशर वाढणार ना, हे जे वॉलचं लाईन आहे ना ऍक्शन, हे असं टिल्ट होऊन असं होणार, म्हणजे हे पॉइंट ओव्हर टर्न होणार. हे पॉइंट ओव्हर, हे वॉल जे आहे हे ओव्हर टर्न होणार, म्हणजे असं ऍक्शन प्रेशर डायग्राम असं होणार. असं झाले तेव्हा बघा, दिस कॅन बी डिवायडेड इंटू 4 पार्ट्स. ओ राईट टॉप, ओ लेफ्ट टॉप, ओ बॉटम
लेफ्ट और राइट बॉटम, चार पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट. ओच्या वर दोन आहेत फर्स्ट अँड सेकंड, ओच्या खाली दोन आहेत. ओ इज ओव्हर टर्निंग पॉइंट. बघा इथं काय, हे आहे वॉल, हे सॉइलचं प्रेशर घालायला आहे, हे प्रेशर दूर चाललंय, सॉइल पेक्षा दूर चाललंय, मीन्स दिस फर्स्ट पार्ट इज टेकन ॲज ऍक्टिव्ह स्टेट ऑफ प्रेशर. फर्स्ट पार्ट इज टेकन ॲज ऍक्टिव्ह स्टेट ऑफ प्रेशर. Okay, and this second part is, which is left of this one O. You see here also at the dredge there is soil. At the dredge there is soil. So this is the pressure diagram. Okay, so here see here it is going away, but here it is towards the soil. When it is towards the soil, then it is called passive state. So number 2 is in passive state. Number 2 is in passive state, whereas number 3, see here again, here this has gone away, this pressure has gone away. this यार 2 तक की यहाँ तक है, ये ओ से नीचे क्या है, प्रेशर डायग्राम आवे गया, ये सॉइल है, सॉइल से आवे गया, सॉइल से आवे गया, मतलब फिर थर्ड जो है अगेन इट इज एक्टिव, अगेन इट इज एक्टिव. वेराज फोर्थ अगेन यहाँ पर सॉइल है, सॉइल फिर से देखिए प्रेशर फिर सॉइल के तरफ, सो यहाँ पर फिर से पैसिव स्टेट बनता. सो 1 इज एक्टिव, 3 इज एक्टिव, 2 इज पैसिव, 4 इज पैसिव. लाइक दिस यू टेक इट, like this we take it. So now if you draw the active pressure diagram, so this diagram will be like this. This diagram will be like this. Got it? This diagram will be like this. This is active state diagram. So here this is passive, this is active, this is, मतलब जो shaded है उतना active है. First part में active है, second part में active है. This I have shown in active pressure diagram. Suppose if you draw the passive pressure diagram, so you will get passive here, passive here. And if you combine these two, you will get a diagram like this. तो यहाँ पर आप इतना ही याद रखो, this is the diagram for a cantilever sheet pile wall. This is the diagram for a cantilever sheet pile wall when it is above the means above portion is also sand, below portion is also sand. So this is the diagram. This much only you should remember. यहाँ पर आपको एक्टिव प्रेशर कैसा आता, पैसिव प्रेशर कैसा आता, कैंटिलीवर में ऊपर सैंड नीचे सैंड है, उसके बाद इसका डायग्राम कैसा बनता, ये डायग्राम कैसा है, आप इतना याद रखो. सो दिस मच इज इनफ. क्लियर द थिंग्स, कळालं की नाही तोपर्यंत? ओके, तो डायग्राम आठवण ठेवून घ्या. बट व्हॉट वी डू इज, बुक मध्ये पण दिला आहे असं बघा, असं 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करताय, पुन्हा हे प्रेशर डायग्राम असं येत आहे, हे फायनल प्रेशर डायग्राम. Okay, so now but this is okay, but generally what we do is we solve this by approximate analysis. तुमच्या सिलेबस करता काय ते डिटेल अनालिसिस नाही, फक्त ते ऍक्टिव्ह प्रेशर कसं ऍक्ट करतात, how the diagram is formed, that much you should know, because most of the times MCQs may be on a diagram also, may be based on diagram also. So now this is approximate analysis. That analysis is very difficult. ते analysis तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही, आठवण ठेवून घ्या. So for your syllabus, approximate analysis is there. For your syllabus, approximate analysis is there. So this approximate analysis is divided into 2 parts. So this part is totally active state and this part is totally passive state. This part is active state and this part is passive. हम ज्यादा उसमें डिटेल एनालिसिस वहां पर बहुत डिटेल में करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं, एक तरफ सारा एक्टिव है, एक तरफ सारा पैसिव है. और ये जो बेस रहता है इसका केपी गामा डी, बिकॉज दिस हाइट ड्रेसलेन हाइट इज डी, पैसिव प्रेशर डी तक हाइट तक की है, एंड फॉर दिस वन इट इज एच प्लस डी. सो दिस बेस इज के ए गामा एच प्लस डी. व्हाट वी डू नाउ, we will take the moments of this triangle and moment of this triangle at this point,
and we equate them, because at this point this will cause anti-clockwise movement, whereas PP will cause clockwise movement. PP will cause clockwise. So equating the clockwise movement to the anti-clockwise movement. Equating clockwise movement to the anti-clockwise movement. Anti-clockwise movement. Clockwise movement to the anti-clockwise movement. Got it? So this is PA and PP. PA and PP. हो गया? तो इसका हम अगर से लेंगे कैसा, देखो मूवमेंट कैसा लेते, हाफ इंटू केपी इंटू गामा इंटू डी, हाफ इंटू केपी इंटू गामा इंटू डी इंटू डी, मतलब देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू केपी गामा डी इंटू डी, half into kp gamma d into d by 3, and this equal to half into ka into gamma h plus d, half into ka into gamma h plus d into h plus d, and where it acts at h plus d by 3, this is going to be h plus d by 3 whole cube. So you equate these two, you will get a cubic equation, and if you solve that one, you will get the value of d, and that is this value. This is called design by approximate analysis. तर तुम्हाला यापर्यंत शीट पाईल वाईल काय आहे, त्याचे क्लासिफिकेशन्स काय आहेत, त्याचा प्रेशर डायग्राम कॅन्टिलिव्हर शीट पाईल मध्ये जेव्हा वर पण सँड खाली पण सँड राहतंय तर कसं राहणार, त्याचं प्रेशर डायग्राम तेवढं आठवण ठेवून घ्या, डिटेल जाण्याचं नेसेसरी नाही तुम्हाला, बट यू हॅव टू डिझाइन इट बाय अप्रॉक्सिमेट अनालिसिस. तर तुम्हाला अप्रॉक्सिमेट अनालिसिस न डिझाइन करायचं आहे, and that you will learn here, you will get here. This is the dredge line for this one. So now this is problems also I solved. तर एवढं मी तुम्हाला लास्ट क्लास मध्ये शिकवलं, एवढं मी तुम्हाला लास्ट क्लास मध्ये शिकवलं. तर एक एक स्टेप बाय स्टेप बघा. तर लास्ट क्लास मध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलं, कॅन्टिलिव्हर शीट पाईल विदाउट अँकर, आठवण ठेवा, cantilever sheet pile without anchor when it is having both म्हणजे काय, वरही सँड आणि खाली पण सँड, वरही सँड खाली पण सँड. सो नाउ व्हॉट वी डू, नाउ वी शल गो फॉर नेक्स्ट केस. आतापर्यंत आम्ही ग्रॅन्युलर सॉइल ला बघितलो, आता आम्ही काय करू, वी विल गो फॉर कोहेजिव्ह सॉइल, म्हणजे ग्राउंड लेवलच्या ड्रेज लेवलच्या वर पण कोहेजिव्ह आहे, क्ले आहे, खाली पण क्ले आहे, तर तेव्हा त्याचं प्रेशर डायग्राम असं होणार. हे कसं येतं, का जास्त डीप तुम्हाला जायचं जरूरत नाही, पण आठवण ठेवून घ्या, दिस इज द डायग्राम फॉर विच वन, फॉर क्ले. ते कसं येतं मी थोडं एक्सप्लेन पण करतो. दिस इज द डायग्राम व्हेन बॉटम पोर्शन इज क्ले अँड टॉप पोर्शन इज सँड. हे तर नंतर बघू आम्ही. तर आता आम्ही फक्त सँड केलो, कॅन्टिलिव्हर शीट पाईल विदाउट अँकर रॉड, वर पण सँड खाली पण सँड. आता काय, वर पण क्ले खाली पण क्ले. तर थोडं मी याचं डिरायव्हेशन काय, तुम्हाला जास्त डीप मध्ये पण जायचं नेसेसरी नाही, तर तुम्ही एवढंच आठवण ठेवून घेत जावा. दिस फिगर शोज द प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन फॉर कॅन्टिलिव्हर शीट पाईल वॉर इन प्युअरली कोहेजिव्ह सॉइल. This is for purely cohesive soil, that is phi equal to 0. The active and passive pressure intensities for a purely cohesive soil are, so PA is equal to, the active and passive pressure intensities for a purely cohesive soil are PA is equal to sigma KA minus 2C under. आता हे कसं आलं तर तुम्हाला मी काय सांगू, हे कोणत्या चॅप्टर मध्ये शियर स्ट्रेंथ मध्ये शिकलेले आहेत, फक्त तुम्ही आता आठवण ठेवा. PA is equal to, that is purely cohesive soil ला PA is given by, for this one whatever the pressure here is acting, sigma KA minus 2C under root KA. KA is equal to coefficient of earth pressure, and this is given by 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi. But since it is a clay असल्या करता phi is equal to किती राहणार, phi is equal to 0, आणि phi is equal to 0 असल्या करता बघा तुम्ही, KA मध्ये 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi, phi equal to 0 substitute करा, तो you will get KA is equal to 1. KA is equal to 1.
So now, so K is equal to 1, Kp is also equal to 1. So you will get active pressure is equal to sigma minus 2C. You remember this sigma minus 2C. Sigma is nothing but gamma D, or gamma Z he has taken. It is gamma D. So P active pressure is equal to this much, whereas passive pressure is given by the same formula with plus sign. So Kp is also 1. So this is sigma plus 2C. So this is sigma plus 2C. See here, active pressure here at the top is where depth is 0. When depth is 0 means sigma is 0. When sigma is 0 means Pa is equal to minus 2C. So at the top it is going to be minus 2C. As it is minus 2C, this is to be left. So this is minus 2C. और ऐसा होते होते यहाँ पर एक्टिव प्रेशर कितना होता है देखिए, गामा डी माइनस 2C, गामा डी माइनस 2C पी आता और गामा डी माइनस 2C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो यहां पर ये प्लस आता, तो ये बनता डायग्राम एट द टॉप व्हेन इट इज क्ले, व्हेन इट इज क्ले। तो आठवण ठेवून घ्या, दिस कोऑर्डिनेट this coordinate is given by minus 2C, whereas this coordinate is given by gamma d minus 2C. Gamma d मतलब यहाँ पर h होता, this is gamma h minus 2C. This is minus 2C, this is gamma d h minus 2C. Gamma h minus 2C. This is minus 2C and this is gamma d minus 2C, गामा d minus 2C. तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको आ गए इस तरह। अबव ये फिगर बन गया आपका क्ले के लिए। याद रखो, ऊपर भी क्ले है, नीचे भी क्ले है। ये डायग्राम आपको परफेक्ट रहना। ये कोऑर्डिनेट कैसा निकालते हैं आप? माइनस 2C। ये कोऑर्डिनेट कैसा निकालते? 4C, सॉरी गामा डी गामा h माइनस 2C, यहां पर है ना, गामा h minus 2C। तो ये हो गया एक्टिव प्रेशर। नाउ एक्टिव प्रेशर इंटेंसिटी एट पॉइंट A at the top is equal to minus 2C and that at the dredge is given by gamma h minus 2C और Q minus 2C। सेम थिंग है, यहाँ पर जो गामा आता है गामा h minus 2C करो और Q minus 2C Q करो, where Q is equal to effective pressure at dredge line। तो आप मुझे ये बोलो, जब कैंटिलीवर शीट पाइल ऊपर भी क्ले है नीचे भी क्ले है तो किस तरह फिगर बनता? फिगर यहां पर माइनस 2C बनता, यहां बनता Q minus 2C, Q minus 2C, where Q is equal to gamma h minus 2C, gamma h minus 2C, gamma h minus 2C. Q is equal to effective pressure at the dredge line is equal to sigma is equal to gamma dash h. Okay. Now the passive pressure diagram is shown at, ये passive pressure diagram है, ये जो था एक्टिव हो गया, अब ये पैसिव है। तो पैसिव प्रेशर कैसा निकालना? तो देखो जी, at the point D, the left of the sheet piling at the dredge line, the overburden pressure is 0. Of course हियर ओवरबर्डन प्रेशर, देखिए सॉइल यहां पर है, सॉइल यहां पर है, यहां पर सॉइल है क्या? नहीं है, तो यहां पर ओवरबर्डन प्रेशर क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओवर प्रेशर क्या रहेगा? 0 रहेगा। नेट प्रेशर एट डी इज PP minus PA, that is passive pressure minus active pressure. Passive pressure is 0 plus 2C. ओके, बिकॉज यहां पर देखो फॉर्मूला क्या है? गामा डी प्लस 2C, गामा डी 0 है तो 0 प्लस 2C, तो ये बनेगा 0 प्लस 2C माइनस यहां पर एक्टिव प्रेशर है सिग्मा माइनस 2C, दैट इज QH माइनस 2C, सॉरी गामा डैश माइनस 2C और Q माइनस 2C। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये आता 4C माइनस Q। तो क्ले के लिए ये हमेशा ये कोऑर्डिनेट है 4C माइनस Q। इतना याद रखो बस। कैसा है एक बार और पढ़ो, आपको मैं एक बार और रिपीट करता हूं। देखो सिलेबस का मत सोचो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। इसके बाद अटेंडेंस तो आप बहुत कम आ रहे, अब 1-2 दिन में मैं शुरू कर रहा हूं अटेंडेंस फोन करना सबको। इसके बाद गेट के क्लासेस शुरू होने वाले हैं, यू हैव टू बी कंपलसरी हियर। उसमें मैं जो बचा कुचा सिलेबस है, गेट के क्वेश्चंस है, हम डिटेल में करेंगे और आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है, ये बात आप मान के चलो। और अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे, मैं खुद पढ़ लेता हूं बोल के वो सब दिमाग से निकाल दो, हम कुछ आपको गलत नहीं पढ़ा रहे। Okay, so this is 4C minus Q, you will get it, that is calculated here.
Now at the point C, at the bottom, the net pressure is given by PP minus P again. So here PP is equal to Q plus 2C, sigma plus 2C. So now this is given by Q plus gamma D plus 2C. Of course, pressure तो पहले का रहेगा ऊपर, फिर गामा डी का Q plus gamma D plus 2C माइनस जो एक्टिव प्रेशर है वो गामा डी माइनस 2C रहता, गामा डी गेट कैंसिल्स, 2C माइनस 2C 4C, सो 4C प्लस Q. तो यहां पर ये 4C माइनस Q है, यहां पर 4C प्लस Q है. So this is 4C minus Q, whereas this is 4C plus Q. This is 4C plus Q. 4C plus Q minus 2C. So you will get the diagram like this. So this is 4C minus Q and this is 4C plus Q. 4C plus Q. ये minus 2C. हाँ? ये Q minus 2C. ये 4C minus Q. ये 4C plus Q. ये चार ऑर्डिनेट याद रखो और ये डायग्राम याद रखो. That much is enough for you for cantilever sheet pile when there is cohesion above and there is cohesion below. There is cohesion above and there is cohesion below. So this is the diagram. ऐसे आपको एक 5-6 केसेस है, उन सब के डायग्राम याद रखो, कोऑर्डिनेट कैसा निकालना याद रखो, प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपको इजी हो जाएंगे. शुरू में चैप्टर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, बट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट एज यू आर थिंकिंग. It is not that much difficult as you are thinking. I hope now, till now, what I taught you, that is what is cantilever sheet pile. कैंटिलीवर शीट पाइल में हम लोग मेनली स्टार्ट करें विदाउट एंकर. कैंटिलीवर शीट पाइल मतलब एंकर नहीं रहता उसको, विदाउट एंकर. और एंकर आए तो क्या क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बाद में बोलता हूँ. एंकर आए तो बहुत सा काम हल्का हो जाता, लेकिन यहाँ पर एंकर नहीं है. तो हम दो केसेस करें. पहले केसेस में क्या था, ऊपर भी सैंड था और नीचे भी सैंड था. ऊपर भी सैंड था और नीचे भी सैंड था, जबकि यहां पर ऊपर भी क्ले है और नीचे भी क्ले है. ऊपर भी सैंड नीचे भी सैंड रहे, सो केस में हमको डिटेल एनालिसिस नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका डायग्राम याद रखना है. यू हैव टू स्टडी ओनली अप्रोक्सीमेट एनालिसिस. और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के मैं 2 प्रॉब्लम आपको करा दिया. नाउ वी आर डीलिंग विद कैंटिलीवर शीट पाइल वेयर देयर इज कोहेजन above the dredge line and also below the dredge line. Also below the dredge line. Also below the dredge line. Above the dredge line as well as below the dredge line. So this is 4C plus Q. So this is 4C minus Q. बस इतना याद रखो. ये 4C याद रखना भी इजी है. 4C minus Q, 4C plus Q. ये डायग्राम कैसा बनता है, ये Z बार है, ये D है, ये H है और यहाँ minus 2C यहाँ जो भी है. इसके बाद 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो and after that I will continue. Okay, so this is the pressure diagram for cohesion above and below. Above and below the dredge line. इतना याद रखो आप, that is enough. मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताते जा रहा हूँ. Okay, have a break of 2 minutes.